नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस प्रोटेक गुवाहाटी प्रीमियर फुटबॉल लीग में। और आज का ये दूसरा मुकाबला बहुत ज्यादा रोमांचक रहने वाला है। प्राइड ईस्ट मैवरिक्स खेलती हुई आपको नजर आएगी बारीकुरी एफसी के खिलाफ। बहुत जरूरी है दोनों ही टीम्स के लिए जीत। जरूर पहला जो मुकाबला आज के दिन का था उससे हमें ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा नहीं, और वहां हम जरूर देख पा रहे हैं एक अच्छा मुकाबला जरूर रहेगा। बारीकुरी एफसी 4 मैचेस में 7 अंक लेकर बहुत ज्यादा मजबूत हमें नजर आ रही है। एक बड़ा मुकाबला हमें जरूर देखने को मिलेगा। दोनों ही टीम्स कुछ ही देर में आपको प्रवेश करती हुई नजर आएंगी। व्हाइट एंड ग्रीन में आज आपको देखने को मिलेगी टीम बारीकुरी एफसी, वहीं आपको ब्लू में देखने को मिलेंगे टीम प्राइड ईस्ट मैवरिक्स के खिलाड़ी। दोनों ही टीम्स की जो स्टार्टिंग 11 है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या है आज की स्टार्टिंग 11 दोनों ही टीम्स की। प्राइड ईस्ट मैवरिक्स की स्टार्टिंग 11: सुभजीत शाह गोलकीपर, अमिया मोंडाल, कौस्तम मलिसैकिया, राजदीप सरदार, मिथुन कर, संजय भूमिज कैप्टन, दिनेश भगवाई, प्रीतम रॉय, इंद्रजीत मोंडाल, गौरव समंता, लखपत तमंग। और आज भी मनोज सरकार को मौका नहीं मिला है स्टार्टिंग 11 में। कोच बहारुल इस्लाम प्राइड ईस्ट मैवरिक्स के। और वहीं पर बारीकुरी एफसी की स्टार्टिंग 11 हमें ये देखने को मिल रही है: आयुष दास गोलकीपर, बहुत अच्छा कार्य किया, दीपन मोरान कैप्टन, सिजोसेफ हाउकिप, सेंट जॉर्ज हरीश चुतिया, लथमन लियान, सौरभ चुतिया, जैक्सन विक्टर, जोसेफ रोबेल। ये दो फॉरेन खिलाड़ी बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं इस टीम में और इस टीम के मैचेस में। एस जॉर्ज कॉम, सैन थैंगबॉय, कोच देबिचेजोम चुतिया। ये रही बारीकुरी एफसी की स्टार्टिंग 11, और दोनों ही टीम्स अभी कुछ ही देर में हमें प्रवेश करती हुई नजर आएंगी ग्राउंड के अंदर। पसंग, नारबू शेरपा गोलकीपर ऑप्शन है ये टीम प्राइड ईस्ट मैवरिक्स के पास सब्स्टिट्यूट के लिए। सौरभ चौधरी, सौरभ घोष, लुंकोसी हाउकिप, मनोज सरकार, नयन डेका। तो ये 6 ऑप्शंस रहेंगे टीम प्राइड ईस्ट मैवरिक्स के लिए। वहीं पर 7 ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे बारीकुरी एफसी के पास। मांगते जॉन, दिनेश दिजेन चुतिया, शांतनु चुतिया, दीपू चौरक, खनिन गोहेन, सिकित चौरक, भवनदा चुतिया गोलकीपर। अगर बारीकुरी एफसी के गोलकीपर आयुष दास को कोई दिक्कत होती है तो भवनंदा चुतिया गोलकीपिंग के लिए आ सकते हैं। टीम कंपैरिजन: प्राइड ईस्ट मैवरिक्स 5 मैचेस खेले हैं, 8 गोल्स करे हैं, 6 अंक हैं उनके पास, यानी जीत हासिल करेंगे तो फिर 9 ही अंक हो पाएंगे। तो प्राइड ईस्ट मैवरिक्स के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि टीम्स के पास मौका है 10 अंक लेकर क्वालिफाई करने का। और अभी तो बारीकुरी एफसी के पास 2 मैचेस बचे हुए हैं, तो ऐसा लग जरूर रहा है कि क्लस्टर बी से बारीकुरी एफसी और ऑल इंडिया एफसी हमें क्वालिफाई करती हुई नजर आएंगी। लेकिन बारीकुरी एफसी के भी स्टैट्स हम देख लेते हैं इस टूर्नामेंट में। 4 मैचेस, 8 गोल्स, 7 पॉइंट्स, 2 जीत उनके नाम है, 1 हार, पिछला मुकाबला उन्होंने हारा, और उसके बाद 1 ड्रॉ, जो पहला ही मुकाबला अपने कैंपेन का खेला था वो ड्रॉ रहा था, और 3 क्लीन शीट उनके नाम रहेंगी। सीधे सीधे चलते हैं वहां हम टीम्स की तरफ, क्योंकि टीम्स लगभग तैयार हैं और वो हमें कुछ ही देर में प्रवेश करती हुई नजर आएंगी। ये दोनों ही टीम्स के कंपैरिजन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्लीन शीट वहां पर प्राइड ईस्ट मैवरिक्स के नाम भी है। चलिए, तैयारियां हो चुकी हैं, मैदान के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार दोनों ही टीम्स के खिलाड़ी। जैसा कि मैंने बताया, व्हाइट एंड ग्रीन में आपको आज पहली बार देखने को मिलेगी टीम बारीकुरी एफसी। वहीं पर अपने नेचुरल ड्रेस में, अपनी जो फर्स्ट ड्रेस है उसी में खेलती हुई नजर आएगी हमें टीम प्राइड ईस्ट मैवरिक्स, ब्लू एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। जहरुल इस्लाम आज के मेन रेफरी हमें देखने को मिलेंगे इस मुकाबले के। और सभी लोग ग्राउंड के अंदर प्रवेश करते हुए। आयुष दास एक कमाल के गोलकीपर, पिछले मुकाबले से पहले इन्होंने कोई भी गोल कंसीड नहीं किया था। थोड़ी देर में सभी खिलाड़ी दर्शकों का अभिवादन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, हम भी अभिवादन करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका।
आपकी उपस्थिति ने इस टूर्नामेंट को नई ऊंचाइयां दी हैं। एक बहुत बड़ा मुकाबला रहने वाला है ये बारीकुरी एफसी के लिए। जीतते हैं तो प्राइडिस्ट मैवरिक्स तो वैसे ही बाहर हो जाएगी, लेकिन अगर प्राइडिस्ट मैवरिक्स जीती तो फिर बारीकुरी एफसी के ऊपर वो खतरे की घंटी मंडराती हुई आपको नजर आएगी, खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आएंगे। फाइनल हैंडशेक और उसके बाद टॉस के लिए दोनों ही कप्तान हमें दिखेंगे। कप्तानी की आज भूमिका में आपको प्राइडिस्ट मैवरिक्स की तरफ से देखने को मिलेंगे संजय भूमिज, वहीं पर बारीकुरी एफसी के कप्तान दीपेन मोरान। टॉस के लिए दोनों ही कप्तान पहुंच चुके हैं। ऑफिशियल्स जहरुल इस्लाम, असिस्टेंट रेफरी 1 प्रेम नार्जरी, असिस्टेंट रेफरी 2 विवेक छेत्री। इन दोनों ही असिस्टेंट रेफरीज को हम पहले मेन रेफरी के रूप में देख चुके हैं। वहीं पर फोर्थ ऑफिशियल कबोन मिली तिसोपी। टॉस की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और टॉस जीता है बारीकुरी एफसी के कप्तान ने। मैच कमिश्नर जादू गोगोई रहेंगे और बारीकुरी एफसी के खिलाड़ी ने और कप्तान ने साइड चूज करी है, तो किक ऑफ करते हुए देखेंगे आपको प्राइडिस्ट मैवरिक्स के खिलाड़ी। और जिस तरीके से भी गले मिलते हुए नजर आए, उम्मीद है कि इसी तरीके से खेल भावना बनाए रखेंगे। मेरा नाम है अमन शर्मा और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद नजर आएंगे आपको पायस जॉन पॉल। आज पहला दिन इस साल का और कितना कमाल कर रहा एफसीआई ने जाते जाते एक संदेश दिया सभी टीम्स को कि उनके पास भी वो काबिलियत है कि वो बड़ी से बड़ी टीम को दिक्कतें दे सकते हैं। एनएफ रेलवे ऐसे एक समय पर जो टॉप पर चल रही थी पॉइंट्स टेबल में, थोड़ा सा जूझते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आखिरी बातचीत उस मुकाबले की शुरुआत से पहले और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया प्राइडिस्ट मैवरिक्स किक ऑफ करेगी। मानस सरकार आज एक बार फिर से मौजूद नहीं है इस मुकाबले में और मानस सरकार की जगह पिछले मुकाबले में लखपा तमंग आए थे, एक और स्टार प्लेयर लखपा तमंग। और वो स्टार उस दिन बन गए थे जब उन्होंने ऑल इंडिया एफसी के खिलाफ अंतिम मिनट में एक गोल स्कोर किया था और अपनी टीम को एक अंक दिलवाया था। जॉन, विद द कन्वर्सेशन ऑफ लखपा तमंग, I would like to welcome you in the com box. The second match of the first day of this year. Definitely not the first day of this tournament. And we are expecting one more good match, as we already saw a draw in the first match between FCI and NF Railway. So might be possible we are going to see the same contest, the same competition between these teams. Lakpa Tamang will be in the starting 11 today. And as I said, I would love to have some words about this player from you. And with this, I welcome you in the com box, John. Thank you so much, Aman. Last match that we have seen like 3-3, but that is not the match scorecard we doesn't want in the the first match of this beautiful year 2024. So Pride is Mavericks versus Barakuri FC, another match number 38 in Guwahati Premier Football League Season 1 2023, and this match is happening under the lights. So Barakuri FC, we know Joseph Rebel, the man, will be the only key role player to watch out. They have some pretty much beautiful players like Jackson Bichard and Saurav Chutia, Letman Lan. This man, Letman Lan, is probably a player will be replaced in the first half or second half. It does. I mean, I'm not having that much idea about Barakuri FC, what they really wants to do. So usually they used to do the changes in the second half that we came to see, in the last few matches back. So Barakuri FC are the second side after the Guwahati Town Club or G Plus Athletics. They scored that 5 goals. I still remember that beautiful match from the Barakuri FC. Joseph Rebel trying to accelerate.
But literally what happened a few seconds back, that ball came right on his slot, but he cleared the ball. The clearance has been came from Joseph Rebel. What's happening here? What a start in this match between these two sides, Pride Mavericks and Barikuri FC. They wants to do something better in this match. They have important player in their side, Lakpak Tamang, and he will be ready to celebrate his own celebration. It's 8-8. Look at the numbers. Total goals between Pride Mavericks and Barikuri FC. So whatever the changes they made in the last few matches, definitely this match is like a must-win situation for the Barikuri FC and Pride Mavericks. So Pride Mavericks, the same problem in this match so far. Mane Sarkar, the man who scored a goal against Mohun Bagan, but a brilliant header came from the hands of Pride Mavericks. Not in control. You need that position and you need that steady mind the way you are converting the goal. So Pride Mavericks are losing in that situation. So what about the tempo of Mane Sarkar? What about Lunga Ahokip, Saurav Ghosh and Saurav Chaudhary? Indrajit Mondal. Remember this man. This man is the first player to score a goal for Pride Mavericks in the first game, and the Mane Sarkar. So why they want to drop an important player like Mane Sarkar? They have to play him in the playing 11 if they need a win, if there is an important match for their side. And in the beginning of the first half, that we can see a player getting injured, and the last match a player going in the structure. So a funny moment happened because Marak, I think Aman will be the right man to float that few things. He will be lucky to talk about those things. Rajdeep Sardar, Mithun Kar, Sanjay Boma is the captain, Dinesh Bhagat, Pritam Roy. There are plenty of names that I can call out from the Pride Mavericks. But it's apart from the Mane Sarkar, what Lakpak Tamang is going to do in this match. Especially, this is another crucial match for the Pride Mavericks. Whether they win or lose this match. But whatever the fight from the team FCI they did, it is like a big learning experience for them. And this match for Pride Mavericks, they have to just go back and see the best example what FCI have literally done it against a team like Northern Frontier Railway. So they didn't bother about the result. They just trusted their process, and that's why the goals have came for the team FCI. And the 2 goals came in the equalizer, and the 3rd goal, it's been a brilliant to watch it from the same man, Fahad Temuri. So is there any player called Fahad Temuri in this match to bring the equalizer or to play that crucial role for their side? Because Mane Sarkar is not playing in the playing 11 for the team Pride Mavericks in this match. So the same mistakes what they were doing in the last few matches, again doing in this year, not in the 2023. And John wants to say that even after 1 year, they didn't learn things. They didn't get what is going wrong for them. This player, jersey number 35, if I'm not wrong, he is Jackson Victor. And John, the jersey numbers has been changed for Team Barikuri FC totally. Talk about Joseph Rowell. He will not be in 16 today. He will be in 18. They have changed their dresses and also the jersey number. जिस फनी मोमेंट की बात कर रहे थे जॉन, वो ये था कि पिछले मुकाबले में विकास मरक हमें चोटिल होते हुए नज़र आए, उनके लिए फिजियो आए, लेकिन स्ट्रेचर पर एफसीआई के कोई और खिलाड़ी हमें बाहर जाते हुए दिखे।
और उसके बाद एफसीआई के वो खिलाड़ी जैसे ही पिच के बाहर पहुंचे, गोल लाइन के बाहर पहुंचे, वो स्ट्रेचर से उतरे और खड़े हो गए और फिर चलने लगे। तो जॉन ये कह रहे थे कि अगर आप चलने में इतना सक्षम थे तो शायद आप चलकर भी ग्राउंड के बाहर या पिच के बाहर जा सकते थे। चलिए वो बातें तो होती रहेंगी। यहाँ पर मैच पर वापस आ जाते हैं। टीम प्राइड ईस्ट मैवरिक्स को एक फ्री किक मिल चुकी है, विसल भी बच चुकी है, एक चिप शॉट है, ये मौका बन सकता है। अच्छा कार्य वहां पर। आयुष दास आज लाल कलर की जर्सी में आपको देखेंगे। जिस तरीके से खड़े खड़े ये शॉट गया, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया, बिल्कुल नपा तुला ये शॉट। वहां अगर पंच आउट नहीं करते आयुष दास तो खतरा हो सकता था, लेकिन आयुष दास की आप जंप देखिए और उसके बाद लैंडिंग देखिए। क्या वो चोटिल हुए हैं? बिल्कुल चोटिल हुए हैं। जब इतनी ऊपर से कोई खिलाड़ी गिरेगा तो यदि कोई चोटिल होने से बचा पाएगा। इस खिलाड़ी ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स दिए हैं, लेकिन एक जो मैं बात कर रहा था, लेकिन एक अपसेट से बच के रहना पड़ेगा टीम बारीकुरी एफसी को। पहले 3 मुकाबलों में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सेमीफाइनल की रेस से बाहर हों। और ये देखिए स्लो में कितना ऊपर से नीचे गिरे हैं आयुष दास, देखकर ही डर लगाए। लेकिन खबर अच्छी नहीं है टीम प्राइड ईस्ट मैवरिक्स के लिए भी। पीठ में लखपत तमंग के कुछ चोट आई है और ये खिलाड़ी अगर चोटिल हुए तो बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है टीम प्राइड ईस्ट मैवरिक्स को। बाहर जा रहे हैं लखपत तमंग, नहीं जा रहे हैं बाहर, वो बोलते हुए कि मैं खेल लूंगा, मैं तैयार हूं खेलने के लिए। बारीकुरी एफसी के लिए एक थ्रो इन, लेकिन ये खेमा उनका ही है तो इसको दूर फेंकने की कोशिश करेंगे प्राइड ईस्ट मैवरिक्स के खिलाड़ी। थोड़ा सा ज़रूर उन खिलाड़ियों को घेराबंदी में फंसाने की कोशिश करते हुए, लेकिन वहां से आसानी से गेंद निकाली जाएगी। और अब तो मिड लाइन के आसपास पहुंच चुकी है गेंद। मनोज सरकार की लगातार बात करी जॉन ने। उस खिलाड़ी के पास एक प्लस पॉइंट हाइट का, अच्छी हाइट है उस खिलाड़ी की, और हाइट आपको हमेशा कॉर्नर्स में फायदा देती है। जब आप हेडर लेने जाते हैं तो आप अपने आप को सबसे ऊपर पाते हैं। सजन एक और ऐसे खिलाड़ी जो बहुत अच्छी हाइट रखते हैं और उन्होंने उस हाइट के चलते कुछ गोल स्कोर किए थे और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे वो। यहाँ पर बारीकुरी एफसी के लिए जीत हद से ज़्यादा ज़रूरी, वरना बहुत मुश्किलों में भी पड़ सकते हैं। फिर से वही काम करते हुए जोसेफ रोबल लेफ्ट फ्लैंक से वहां कमाल का रन बनाया। लेकिन एक चीज़ के बारे में जॉन ने बात करी थी पिछले मुकाबले में भी कि ये टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जोसेफ की तरफ से। जोसेफ कम ही कोशिश करते हैं कि वो अपने किसी साथी खिलाड़ी को गेंद दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि गेंद को खुद ही गोल पोस्ट के अंदर डिलीवर करें। क्या ये सही चीज़ है? ज़रूर सोचने वाली चीज़ है। एक टीम गेम है फुटबॉल, और अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन है गोल पोस्ट के सामने से, आप अगर फाइनल टच दे सकते हैं उस प्रोसेस को तो ज़्यादा बेहतर होगा। जोसेफ रोबल पहले फॉरेन प्लेयर थे इस प्रोटेक गुवाहाटी प्रीमियर फुटबॉल लीग में खेलने वाले। उसके बाद उनको ज्वाइन किया जैक्सन विक्टर ने, और भी कई नाम हमें देखने को मिले फिर इस प्रोटेक गुवाहाटी प्रीमियर फुटबॉल लीग में। एक कमाल की प्रतियोगिता रही है ये। लीग राउंड के अंत तक लगभग हम पहुंच गए हैं और अभी भी हमें ये पता नहीं चला है कि कौन है हमारी टॉप 4 टीम्स ओवरऑल, जब हम बात करते हैं 14 टीम्स में से। सेमीफाइनलिस्ट 2 मिल चुके हैं हमें, टीम जीपीआई क्लस्टर ए से, और क्लस्टर बी से हमें देखने को मिलेगी टीम ऑल इंडिया एफसी।
बारीकुरी एफसी के पास भी मौका है आसानी से क्वालिफाई करने का, अगर जीत हासिल कर लेते हैं। कम से कम उनको किसी दूसरी टीम पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जिनको दूसरी टीम पर डिपेंड होना पड़ेगा, और क्या उस चीज़ के लिए तैयार है टीम बारीकुरी एफसी। अगर आज जीत उनको नहीं मिली तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। मान लीजिए अगर ये ड्रॉ खेलते हैं तो 5 मैचेस के बाद इनके 8 अंक हो जाएंगे। और बारीकुरी एफसी जिस क्लस्टर में है उस क्लस्टर की जो पॉइंट्स टेबल है पूरी तरीके से ओपन है। लगभग हर टीम के पास मौका है क्वालिफाई करने का। इवन प्राइडिस्ट मैवरिक्स बाहर है ऐसा भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि उनके पास भी हमें 6 अंक देखने को मिल रहे हैं। वो अंतिम मुकाबला अपना खेल रहे हैं, अगर जीतते हैं तो 9 अंक हो जाएंगे। और बारीकुरी एफसी इस मुकाबले में साफ उसका मतलब यही है कि हारेगी। अगर प्राइडिस्ट मैवरिक्स जीतती है तो बारीकुरी एफसी हारेगी, और उनके पास फिर 5 मैचेस में 7 अंक रहेंगे। और अगला मुकाबला भी अगर उनके फेवर में नहीं गया, ये सारे एजम्पशंस मैं लगा रहा हूँ, कोई भी इस बात से ऑफेंड ना हो। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लस्टर बी की पॉइंट्स टेबल किस तरीके से ओपन है, प्ले ऑन है, गेम ऑन है उसमें। बहुत बहुत रोमांचक रहा है ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट। एसीबी स्पोर्ट्स क्लब वो भी थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करेंगे। 2 मुकाबलों में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है। कॉर्नर में लाया टीम प्राइडिस्ट मैवरिक्स को। जॉन, एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट जोसेफ रोबल। कॉर्नर पे पहले बात कर लेते हैं। खिलाड़ी को गिराया गया बारीकुरी एफसी के, और तुरंत ही विसल बजी है, और प्राइडिस्ट मैवरिक्स को जो मौका मिला था उसको ज़्यादा कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। So coming back to my point, John, I was actually talking about Joseph Robel. You talked about him last match, and you told that this thing is not good, that he will keep the ball to himself only, he will not pass the ball, and we have seen actually that he does this thing. So you can say that this thing and these things will not work for a team. If you are only thinking of scoring a goal for yourself, this is not a good thing, because he is a good athlete. He runs very quickly. With the ball from the left flank. We have seen so many times, but we have rarely seen him passing that ball towards center or any right flank. John, what's your point of view on this? Do you know why Cristiano Ronaldo is more successful in Real Madrid? When he played for Real Madrid, now he's playing in different league, for different team, and it's a different franchise. So why Cristiano Ronaldo has been one of the successful player when he played for Real Madrid? Most number of the passes and the assists came from Luka Modric. Not only Luka Modric, there are some players like Benzema and Ozil. I can keep on tell some few players. So Ronaldo may be the highest goal scorer, and he may be the highest goal scorer in the international side for his country in any other situation. I'm telling, in any other match, but he's been one of the promising and prominent specific and prolific goal scorer for his side. If he wants to create a own record for his performance, or if he wants to do something for his side, he would have played as self game. There are some people keep on telling that Ronaldo will be playing a self game to create his own chance, and there are some several games which went like that for Real Madrid, or when he played for the Manchester United. But when it comes to the team combination and the team perfection, Real Madrid is one of the best franchise, one of the best side I have ever seen in the La Liga. So that's why they are so successful, and that's why they have won many championships.
like La Liga or the Champions League or any other competitions, which I'm telling. So that's why they are being one of the successful and best side to watch out. So they play as a team game, so not only as an individuality performance. So that is why I have mentioned about Barikuri FC in their last match, why Joseph Rebel wants to play a self game. And here is a time for the first goal. Barikuri FC has taken a first blood in this match. Joseph Rebel, oh my goodness. Exactly, we were discussing about you. I think he would have listened to my words, I don't know. Jersey number 18, Joseph Rebel. No one can beat his speed in this 90 minutes football match. He is actually a great runner, a great sprinter. Look at the celebration. This is what I'm telling. He is a great runner. And that speed and that control, no one can do it in this GPFL. Is there any other player to beat Joseph Rebel in the running race? Aman, I think you should put your name on board. In a 100-meter race, I will be behind by almost 50 to 60 meters. Joseph is too fast. Actually, while I was asking you that question, and when I gave you that mic, John, I actually mentioned this thing that Joseph, undoubtedly, he is a good athlete. He has some good speed, but he is not actually able to execute it. But now he executed that, and what a goal from his side. It was actually a race between Pride East Mavericks and the player of Pride East Mavericks, and then Joseph Robel. Joseph Robel reached first, and then he just chipped that ball, and that was the first goal for Barikuri FC. It is an interesting game. It important game for both the teams, not only Barikuri FC, also Pride East Mavericks, because Pride East Mavericks, if they win, they can also hope that if the rest of the teams does not play that good, so they can also qualify. And if Railway one team, whom we were looking like they can qualify easily, they didn't do that. John, a good start for NF Railway, and then the things like the tables just got turned. First two matches they won them, and now we are seeing that they are out of this race of qualifying into the semi-finals. Do you have something to talk about NF Railway? Because it was the team who took the first win of this Protech Guwahati Premier Football League, and now they are out of the race. Would you like to say something about NF Railway? See, Australia won many competitions. Australia won many matches when it comes to the ICC matches, which I'm telling. And in the same scenario, when you just go and take a look on West Indies, ICC matches for West Indies is always been a lucky factor, not only in ODIs and also in the T20Is. What happened to West Indies in the 2023 World Cup? I think a two-time champions, Clive Lloyd, and in the T20Is, Darren Sammy lifted the T20 World Cup for the West Indies. So what happened to the West Indies in the 2023 ODI World Cup? An experienced side, an experienced players they do have. It's because of the board issues. They literally keep on changing the players, and also there are some other personal issues. The lack of team combination, they couldn't able to find the best players in their side. So that's why
they failed to qualify. So winning your first two matches or the third and fourth, so if you have failed to win your fifth and sixth, it doesn't mean that you will be finishing in the top. Do you know what is the meaning for the word called consistent? Consistency is very, very important. Not only when you are playing in your game and also in your life. And here comes the Parikuri FC second goal. Jersey number 33. The ball went like a treasure bullet. Big ball. It is not a tennis ball or a cricket ball. It's George Combe. Great athlete after Joseph Rebel. Looks like he is not a tall player. He is not a tall man. And how it hit. Ball came right on his money. And surely goalkeeper will be watching this ball where it is going. Maybe the top corner. And here comes the CR7 celebration. Without this celebration, this day should not be going to complete. Earlier we have seen one beautiful celebration in the last match. But after this, Cristiano Ronaldo, you just have to watch this, because the man who is celebrating your celebration in Guwahati Premier Football League. So it's 2-0 right now. Barikuri FC leading in this match. Yes, they were in need of those goals. And now they got. It's 2-0 now. First goal was being scored by Joseph Rowell, and then as George Combe. He showed that patience and he was there for that kick for a long time, and once he got the chance, he just kicked that ball inside that goal post. This man will be happy. We just can't go out of this goal post to score the goal, but still, he has done so many things. I talked about it so many times, and I will once again mention it that after the first match they played against some police, this man became the player of the match. And when he came to me and I asked few questions to him, and my first question was like, how does it feel when a team plays draw? He had some answer, but the most important question I asked to him, that what do you think, Ayush? Where did your team lack? So he told me that we will be focusing on finishing. And then in the very second match of the campaign, team Barikuri FC beat a team United Chirangdor FC by 5-0. So in the next match against I actually don't remember, but they won that game by 3-0. So back-to-back wins for them, and Joseph Rowell is on the ground. Not a good sign for Barikuri FC. Jackson Victor is going there. He's trying to get some information. This run. So when you will collide with a player like this and with this speed, you are surely going to put yourself in danger. Let's come back to your point, John. You talked about consistency. So just hear this, that NF Railway SA won their first two matches and they didn't qualify. On the other hand, Team DBI lost their first two matches and they are in. So if you are not getting that consistency, but before that, let's take a look at this goal, that free kick which got the conversion, and it was a second goal, top corner of the goal post, and as George Combe with his celebration, the iconic celebration of CR7. But Joseph Rowell has some different celebration. And let's talk about celebrations, John. What do you think
which player has the most interesting and entertaining celebration. And I will just like remind you about the celebration of Kanna Tumung, if you remember. So you have so many options. Like I remember only this CR7 celebration from many players, but a different, a unique, an iconic celebration. If we will talk about, then we have Joseph Robel, Karna Tomong with his dance, and then Lakpa Tamang also. So let's see that among all those three, which celebration did you like the most? Everyone knows that Karnatumang will be the first man, will be, if it is coming to the celebrations mode. And everyone in our production side literally enjoying it. And they are keep on, watching repeatedly in a day by day, every day. They wants to watch the celebrations. So match number 37 we have witnessed last half an hour back, and this is match number 38. Bariguri FC 2 goals, and one thing I really felt slight disappointment when I see the performance of Bariguri FC or teams like Food Corporation of India. The teams which is in the bottom of the points table in the both the cluster, just go and take a look out of their previous match. I mean, in 2023, this is 2024. So the matches they wants to win, in that match they literally lost that match, but they want to give a comeback in the match they doesn't want to win. So what is the logic in that? So whether you just want to play that match that you're already been a part of this GPFL, or it doesn't mean that you doesn't want to win the championship. So the teams which is in the bottom are not having a dream or a goal to purchase or to get that championship trophy. So they are not the one being ready to be named as the winners of this GPFL. But when you see in this case Oil India from the another cluster and also Team DBI in the cluster A, absolutely brilliant. They knows their game level very well, and they knows their players and each and everyone, their study mind, and also even though if they lose one match, they will surely will give a good comeback. So that is what I have learned, that is what I have seen from the team like DBI, Decabricks Industry. If someone in asking, or if someone getting a thought like why Team DBI which is in the top, you should go and take a look what they have literally done in their last few matches, and just you have to go and check the comparison level of game number 1 and the next matches, the way they played, the way they given the tough fight back. Numaligar Refner Limited didn't able to convert it properly, but they still fighted against Northeast United FC in their second match. So what is coming to my mind right now, if you are failed to play your important player in your playing 11, so why Papu didn't play in the next few games, and why Nelson Rimbai didn't able to play get his play time in the second half for the G Plus Athletics. There are so many confusions which is literally coming to my mind. Why the teams are didn't able to qualify in the top? They were not able to put their team name in the top of the points table. This qualification scenario and this qualification battle is not only for the teams which is in the top of the points table, not only for the team like DBI and not for the team like only Oil India. What, Aman, do you want to say anything?
Indeed. And whenever we talk about DBI, we always talk about that comeback. They won their last four matches consecutively, and they are now into the semi-finals. And I recently saw their social media post, and they also mentioned that thing in the caption that it was a great fight back. Indeed, it was a great fight back. It's not necessary that how you start. The most important thing is that how you end. And the last day means yesterday was the last day of the year. So whatever you did till that day, you are going to remember that yes, in 2023 I did that. I got that thing. I secured that thing. But from today, you will be having a restart. Or you can say it's just a change in the date, but still, I have seen so many people taking those resolutions, doing something great, doing something new, and from that day they try to just go with the flow. So at last, the ending is going to matter. The starting of every movie is so beautiful, so elegant. You will find John wants me to say so elegant, so I just messed up. Good shot, but I think that deflection came. Are we seeing a change in the goalkeeper? Let me just have the confirmation that whether Subhajit Sai is there or not. Yes, he is there. I thought that there is a change in the goalkeeper. Corner for Team Barikuri FC. I'll come back. That what John wants me to say. A flatter corner, not of that much use, and now a throw in. So John wants me to say so beautiful, so elegant, just looking like a wow. And I will be saying it whenever somebody will score a goal. Actually, I was talking about the starting and the ending. For most of the times, ending matters, and DBI got that ending of this league round. They have 12 points after 6 matches, and after doing all the calculation, we can surely say that Team DBI is in the semi-finals. A historic comeback, we can say, in this Protech Guwahati Premier Football League, because it's going to be a history. There will be so many seasons, there will be many years where we are going to see that teams will make a comeback, teams will do something new. And as I said, that there is a change, and we have a change in the goalkeeper. Pasang Narbu Sherpa has come in place of Sobhajit Saha. Chance, but Ayush Das with the same thing. He didn't go ahead. He waited for Captain Eye on the ball and grabbed it successfully. For the second time, we are seeing this from Pride Mavericks, that they have changed their main goalkeeper. And Sherpa is coming for the second time in this Protech Guwahati Premier Football League. The first time he came, the things didn't go in his favor. And let's see what happens when he has come. It's already 2-0. Sobhajit Saad, he conceded 2 goals. Might be it's the reason because of which he is not now on the ground. Jackson Victor inside the penalty box. Team Barikuri has a chance, but that whistle blows. I think that offside call. Joseph Frobel was in the correct position. He was about to go for that kick, but before that, we saw that whistle coming, and this little kid kicking that ball. Fortunately, the mic is not with John, otherwise he would have said it, that young Aman.
Marikuri FC is a great team. They have shown that consistency in the first 3 matches, but the story has not ended now. Pride Mavericks, they have also got the victory in the previous match against ASEB Sports Club. It was a big win for them. They were trailing by 2 goals, and then they scored 4 back-to-back goals, and they won that game by 4-2. So they also know that how to make a comeback. They also know that how to score goals. And once again, they are trailing by 2 goals. And the same thing happens whenever you are trailing, like you show that desperation. And Pride Mavericks, if they are going to score a goal in the first half, then I can say things will be okay. Otherwise, in the second half, to score 2 goals or more, then that might be dangerous. But Sherpa, what are you doing? Are you kidding me? But a great save by the player of Pride East Mavericks. This should have been the goalkeeper, but goalkeeper was pretty much ahead of that penalty box. He almost went out of that penalty box and that sideline. But good presence of mind by this player. Great save by this player. Once again, let's take a look at the replay that what actually happened from the different angle. Sherpa almost went for that ball. This was a chip shot. Joseph Robel, he didn't get the ball because of Sherpa, but Sherpa, what I should say, that you did a great job on this man. It's quite confusing. I think it's for the first time we are seeing a goalkeeper coming this much further than the goal penalty box. From that penalty box. Not so many minutes left in this first half. Marikuri FC is still leading by 2 goals. Will be a throw-in for Pride East Mavericks. It was a clearance by Jackson Victor. And Jackson Victor was appealing. But the referee didn't show any kind of interest in that. Pride East Mavericks has some good tall players. This player, jersey number 2, Rajdeep Sardar. After watching his surname, I thought that Manoj Sarkar came, but Rajdeep Sarkar. A good cross, but a good clearance also. So it will be a corner for Team Pride East Mavericks. It was a good long ball, but Lakpa Tamang. He couldn't reach that ball, or you can say the ball went over him. Corner, Rajdeep Sardar with that in-swinging delivery. It was a flatter one. Ayush Das once again collected it safely. And we were talking about the consistency, so it's not about the team's consistency. We will be talking about some players who showed some good intent in the first games, and then they lost that momentum. In the first match, the first goal scorer of this Protech Guwahati Premier Football League, KC Lal Chaumabia, he scored 2 goals in the first match, and then where that performance went, we didn't see that. We were talking about Jitu Moni in the first match, and then he committed so many mistakes in the 4th or 5th match, but he has some good skills. Mistakes are a part of life, but if you are not learning from those mistakes, then it's a big mistake. Jitu Moni and Vikas Marak, Sukanta Roy, so many good goalkeepers we got in this Protech Guwahati Premier Football League.
Ayush Das, December Khongjo. Yesterday, John was saying that it's last day of December, and how can you miss December Khongjo? Okay, in January, I just took his name. It's very tough for Pride Mavericks now because the defense of Barikuri FC is very, very good. Lakpat Amang or any player, he will not get those free chances. Rajdeep Sardar once again from the left back. Passed this ball to Lakpat Amang. Jackson Victor came. And Lakpat Amang is again on the ground. And this is the second time Physio is coming to the ground. And we are going to see so many minutes to be added in this first half. So many injuries we have seen. And Lakpat Amang is in lot pain. He's just tapping his hand on the ground. And he is asking to the referee that why didn't you show that yellow card or anything else? Is he fine? That's the biggest question. Because red card and yellow card will come and go. But being healthy, being fine is something which will keep you in this game. Let's see this tackle once again in the replay. Oh. So it was a great collision, we can say. Even it was not a free kick, the play will be resumed. John, do you also remember some names who was looking good in the starting but didn't show us that consistency? Talking about the players. There are so many, I think. But I would love to hear from you if you can tell me some names. This 2024 will be a more interesting one when we came to see that we are ready to see in the next week, because it's going to be a knockouts, the semi-finals and finals. And the one player which you are expecting from your mouth that I wish to say that I can say there are some promising players like Joseph Rebel. He's a man from the Barikuri FC, to bring the goals for the Barikuri FC, and also, as I've mentioned earlier, that Nelson Rimbai for the J Plus Athletics and Northern Frontier Railway KC Lal Somabia. But can you feel the difference of KC Lal Somabia from the very first game for the Northern Frontier Railway and Sibra Nazri? It's like a question mark. Why Sibra Nazri and KC Lal Somabia couldn't able to do it for the Northern Frontier Railway? Instead of that, Bijoy Das was not playing for Northern Frontier Railway in the last few matches back. So it's 3 minutes added time in the first half in the match number 38. Pride East Mavericks still finding the answers for the questions which has been raised from the Barikuri FC. Joseph Rebel scored the first goal and St. George Combs scored the second goal. So now is the responsibility of Pride East Mavericks. Can they do it in the added time of the first half? So what will be their game tactics and what will be their follow-ups with their players? So the next 2 minutes, it's going to be a decider for the Pride East Mavericks. Not in this GPFL, in this match. Three minutes extra time. I was actually expecting a little bit more. We were talking about KC Lal Chamabia. In some of the games, we didn't see him in the starting 11. So if you will not show that confidence towards your player, he will also get like low motivated or whatever you can say, demotivated. So the first thing a team should do, that they should show that confidence in any player. It doesn't matter it's KC Lal Chomavia or
any other player. We have seen this controversy so many times that the players are not getting chances, players are not getting opportunities. How will they perform? How can you just judge by a game or two? Yes, it is a thing. And when your player is scoring goals, I think you should go for him. It might be possible when he was not playing, like he was not available also. So that may be the reason of not being on the ground. Rajdeep Sardar, one more tall guy from Pride East Mavericks. But he has also not utilized his this plus point, his height. So many spectators and few last games of league round of this Protech Guwahati Premier Football League. Lakpat Amang went for that ball, but Ayush Das, he's very, very cunning. He's silent, and I will say that he's a silent killer. बहुत सारे यादगार लम्हे दिए हैं इस प्रोटेक गुवाहाटी प्रीमियर फुटबॉल लीग ने। और चलिए इसी के साथ पहले हाफ की विसल बज चुकी है। इस समय बारीकुरी एफसी 2-0 से आगे, और जो 2 गोल्स आए हैं उसमें से पहला गोल आया जोसेफ फ्रोबेल की तरफ से, और अगले 5 मिनट के अंदर ही एस जॉर्ज कॉम ने गोल स्कोर करके उस बढ़त को दोगुना कर दिया। जहरुल इस्लाम, विवेक छेत्री और प्रेम नार्जरी, तीनों ही शख्स बहुत ज़्यादा खुश इस पहले हाफ से, क्योंकि एक रेफरी कभी नहीं चाहता कि वो कंट्रोवर्सी या आर्ग्यूमेंट में फंसे, क्योंकि ये गेम ही बहुत ज़्यादा इंटेंस गेम है। आप यकीन मानिए कि कभी कभी प्रेशर ये रेफरीज भी फील करने लगते हैं। तो पहले हाफ के बाद जो स्कोर लाइन है वो हमें 2-0 देखने को मिल रही है। बारीकुरी एफसी 2 गोल्स की बढ़त के साथ मजबूत नजर आती हुई हमें। वहीं प्राइड ईस्ट मैवरिक्स, उन्होंने अभी भी कोई गोल स्कोर किया नहीं है। लेट्स सी कि दूसरे हाफ में क्या होता है, और क्या प्राइड ईस्ट मैवरिक्स वापसी कर पाती है या नहीं। प्राइड ईस्ट मैवरिक्स ने पिछले मुकाबले में भी 2-0 से पिछड़ने के बाद वो मुकाबला 4-2 से जीता था एएससीबी स्पोर्ट्स क्लब के खिलाफ। तो क्या उस तरीके का एक कमबैक आने वाला है, जानने के लिए बने रहिए फैन कोर्ट पर। कुछ ही देर में हम आपके साथ फिर से जुड़ते हुए नजर आएंगे उस दूसरे हाफ में। धन्यवाद।
Hello and welcome back everyone for the second half of this match number 38 in Guwahati Premier Football League Season 1. Whether I should say 2023 or 2024. So it's 2024, the first day. What a match. It's turning out to be between Pride Mavericks and Barikuri FC. And Barikuri FC so far, they came with some fresh plans and fresh ideas. Worked very well for them. Joseph Rebel, the man, he's been such a phenomenal form throughout this last few weeks. I mean, the 2023, I'm just talking about that. St. George Combs scored the second goal. Let's see this positive chat from the Pride Mavericks towards the left on the screen that we are witnessing right now. Have to check whether it's going to work or not. And here, the spectators and the little girl, she's busy over the Nokia connecting people. It is not about the Nokia connecting people, maybe some other mobile phone, and that's what she can celebrate the new year, because we are living in a virtual world. It's not the 1990s, or it's not about the 1980s, what our parents, usually not getting connected to this kind of such things. But in today's world, this is actually, a virtual world in 2024. And now, both the team players are ready. Dinesh Bahat, Prajem Roy, Indrajit Mondal, Gaurav Samanta, Lakpak Tamang, Saurabh Chaudhary, Saurabh Ghosh. Now the question which is coming to my mind is, what about Manas Sarkar, the man who scored a goal against Mogun Bagan in the beginning of this GPFL? So let me find out the answers why Pride Mavericks are still going with the same strategy what they have done in the last few matches. Quite a tough one to identify. And here the Joseph Rebel, I think, should be from the left. Oh, that's a good dribble and turn that we can see some masterful, what you can tell, some big skills from Joseph Rebel. That's why he's been the champion player for Barikuri FC. And we just have to take a look one more time
what Joseph Rebel did, especially on that zone. I think Aman will be the man right to, discuss about this. It was fantastic, but the finish he didn't get. And once again, that thing, that temptation. When he can run this much fast, I think he should also try to give the pass or the ball to his co-player. लेकिन कुछ भी हो, अभी बारीकुरी एफसी आगे चल रही है, तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा मलाल रहेगा नहीं उनको. उत्कृष्ट खिलाड़ी है एक ये जोसेफ रोबेल. वहीं पर ये भी जो अभी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लखपत अमंग. अंतिम हाफ. आज ये साल का पहला दिन और आज का जो पहला मुकाबला था वो कमाल का रहा प्रोटेक गुवाहाटी प्रीमियर फुटबॉल लीग में. 3-3 की स्कोर लाइन देखने को मिली हमें. टीम एफसीआई टीम एनएफ रेलवे के खिलाफ आज एक कड़ी चुनौती रखती हुई हमें दिखी. टीम बारीकुरी एफसी ऑफसाइड का फ्लैग उनके अगेंस्ट उठाना है. शेरपा को नजरें बनाए रखनी होंगी. अच्छा कार्य किया शेरपा ने, वो पोस्ट छोड़ा नहीं, उसी से चिपके रहे और जानते थे कि फार पोस्ट को टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस में है नहीं वो. जितनी जल्दी हो सकेगा वो शॉट लेने की कोशिश करेंगे और अच्छा एंटिसिपेशन शेरपा का, जिस वजह से वो उस गेंद को एक बार में कलेक्ट करा. कोई दिक्कत नहीं हुई. और यहाँ पर जैक्सन ने क्या करा, थ्रू बॉल निकालने की कोशिश थी लेकिन बीच में ही टीम प्राइडिस मैवरिक्स के खिलाड़ी आ गए. फिर से जोसेफ रोबल, जैक्सन विक्टर, बैक पास आने की पूरी प्रोबेबिलिटी. आया है बैक पास. लखपत अमंग अभी भी इंतजार करते हुए कि गेंद कब मिड लाइन के इस तरफ आएगी. गेंद तो आई थी लेकिन उनसे थोड़ी सी दूर रही. अब आ सकती है गेंद उनके पास, लेकिन फिर से गेंद को गवाया. बॉल पोजीशन गेम बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी खेल में. वो बॉल पोजीशन दिखा रही है टीम बारीकुरी एफसी. एक चिप शॉट जो कि सीधा हमें जाता हुआ नजर आया टीम प्राइडिस मैवरिक्स के खिलाड़ी के पास. फिर बारीकुरी एफसी के पास गेंद. फिर से बारीकुरी एफसी, जोसेफ रोबल राइट फ्लैंक से अंदर की तरफ, पेनल्टी बॉक्स के अंदर ऑप्शंस देखते हुए बाहर की तरफ गेंद आई. क्रॉस आया है लेकिन शेरपा ने अच्छी तरीके से कलेक्ट करा उसको. बहुत जल्दी उनको टेस्ट किया गया है इस दूसरे हाफ में. अब तक चाहेंगे कि उनके डिफेंडर्स थोड़ा सा अच्छा कार्य करें ताकि गेंद उन तक ना पहुंचे इतनी जल्दी. रेगुलर इंटरवल्स पर अटैक बनाती हुई नजर आ रही है हमें टीम बारीकुरी एफसी. अप्रोच बिल्कुल साफ है बारीकुरी एफसी की. 2 गोल से बढ़त बनाने के बावजूद वो हमें पूरी तरीके से पैसिव जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और ये एग्रेसिव अप्रोच उनको बहुत ज़्यादा काम आ सकती है. जोसेफ रोबल, चिप शॉट की ज़रूरत थी वहां पर लेकिन जोसेफ रोबल इस बार थोड़ा सा पीछे रह गए क्योंकि शेरपा आगे आ गए थे. शेरपा ने बहुत समय तक सोचा और फाइनली जाकर वहां अपने चेहरे को भी बचाया और गेंद को भी. ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं जब आप इस तरीके से सेव करने जाते हैं. हो सकता था कि शायद वो घुटना चेहरे से टकरा जाता और दिक्कत में पड़ जाते, लेकिन आज लखपत अमंग का दिन नहीं है. लगातार चोटिल होते हुए नजर आ रहे हैं ये खिलाड़ी. हमें तीसरी दफा ऐसा हो रहा है जब ये ग्राउंड पर गिरे हुए दिख रहे हैं हमें. वहां पैर जरूर खिंचा है, वो गेंद पर पैर रख दिया जिस वजह से अब पैर में इनके दिक्कत आई है. रेफरी की विसल, यानी कि रेफरी का ऐसा मानना कि शायद टीम बारीकुरी एफसी के खिलाड़ी की गलती. लेकिन लखपत अमंग क्या आगे का खेल जारी रख पाएंगे या फिर टीम प्राइडिस मैवरिक्स को एक बड़ा झटका लगने वाला है. पहले ही वो 2-0 से पिछड़ रहे हैं और स्ट्रेचर की मांग की गई है जहरुल इस्लाम की तरफ से. उठने में सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं लखपत अमंग. स्ट्रेचर आ चुका है और आज इन स्ट्रेचर बॉयज को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है. शायद एक दिन में सबसे ज़्यादा बार स्ट्रेचर
आज के दिन ही आया है कई खिलाड़ियों के लिए। ये नया साल, ये नए साल का पहला दिन उतना अच्छा रहा नहीं है। लखपत अमंग बिल्कुल भी अच्छी परिस्थिति में है नहीं। देखना ये पड़ेगा कि क्या इनके लिए कोई सब्स्टिट्यूट आता है या फिर यही वापस ग्राउंड पर आते हुए हमें दिखेंगे। क्या मानस सरकार की एंट्री हो सकती है? प्राइडिस मैवरिक्स अपने कैंपेन का अंतिम मुकाबला खेलती हुई जीत हासिल करेंगे तो फिर उम्मीदें बनी रहेंगी, लेकिन डिपेंडेंसी दिखानी पड़ेगी दूसरी टीम्स पर। कंसिस्टेंसी इनकी तरफ से भी हमें देखने को मिली नहीं है। निरंतरता इन्होंने भी नहीं दिखाई है, और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। इंग्लिश में बोलें तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। और जो कंसिस्टेंसी दिखाएगा वो सफल होता हुआ हमें नजर आएगा, और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम बनती हुई नजर आई है हमें इस प्रोटेक गुवाहाटी प्रीमियर फुटबॉल लीग में टीम टीबीआई। एक सेटबैक के बाद पहले 2 मैचेस में एक फाइट बैक, एक कम बैक आया है उनकी तरफ से अगले 4 मैचेस में, जिसकी वजह से इस समय तो क्लस्टर ए से क्वालिफाई करने वाले सेमीफाइनल्स में एकमात्र टीम बने हुए हैं यहाँ पर प्राइडिस मैवरिक्स। क्या कुछ डैमेज दे पाएगी टीम बारीकुरी एफसी को? जवाब है नहीं, क्योंकि क्लियरेंस आया है तुरंत ही। अभी भी गेंद प्राइडिस मैवरिक्स के पास, बहुत समय के बाद ये अटैक बनता हुआ दिख रहा है प्राइडिस की तरफ से, लेकिन बारीकुरी एफसी के खिलाड़ी हर एक मुमकिन कोशिश करते हुए वहां, फिर भी प्राइडिस मैवरिक्स के खिलाड़ी जुझारू खेल दिखाते हुए, कितना भी टफ टाइम आप दे लीजिए लेकिन उनको जो करना है वो करना है। गिरे हैं वहां प्राइडिस मैवरिक्स के खिलाड़ी, यानी कि फ्री किक मिलेगी। अभी तक कोई भी गोल आया नहीं है प्राइडिस मैवरिक्स के लिए। क्या ये पहला मौका होगा? क्या ये पहला गोल होगा? कई खिलाड़ी उस गेंद के आसपास हमें नजर आते हुए, पहले ही खिलाड़ी आगे पहुंचे, क्रॉस, लेकिन आयुष दास को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत करते हुए नजर आएंगे वहां पर दर्शक हमें, क्योंकि गेंद पहुंच गई है दर्शकों के पास। आयुष दास के लिए भी ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। पिछले ही मुकाबले में जरूर कुछ गोल्स कंसीड करे इन्होंने, लेकिन जॉन से मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, जॉन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गोलकीपर आयुष दास? Do you think that he has shown that consistency? Because in the first 3 goals, he didn't concede any goal. In the first 3 matches, he didn't concede any goal. And in the 4th match, he conceded, I think, 2 goals against All India FC. All India FC won that game. They qualified into the semi-finals. But few words about Ayush Das. John? Conceding a goals for the team Barikuri FC, will it turns any a big impact for their upcoming match? So that is another thing that we need to watch out from the team Barikuri FC. So how this is going to be a, play an impact role for them to play the next few minutes in this 90 minutes football match. Ayush Das has been a brilliant goalkeeper that we came to see that in the last few matches for the Barikuri FC. But the major point from the Barikuri FC is Jackson Victor or Joseph Rebel has always been accelerating the match to score the goals for their side. Either it's Letman Lan or Arish Chutia or Saurabh Chutia, St. George, say Joseph Aoke. They were been so brilliant the last few matches. So it's not only about the goalkeeper. And look at the dribble and look at that skills from Joseph Rebel. Here comes the cross. Chance for the Barikuri FC. 1 bounce, 2 bounce, but straight
to the spectators. Look at the elevation, that aerial route, and that delivery. Yes, 1 bounce, 2 bounce, and yeah, it's going to be a catch signal from the spectators that they want this big ball to play. But if they want this big ball, means then what Barikuri FC and Pride Mavericks will do in this match. So referee will be going and asking the question to crowd, please, give that big ball. We don't have any extra balls to play in this football match. So as of now, the story of Barikuri FC is 2-0. So Pride Mavericks, they came with some, new players the last few matches that we have seen, but the thing, what happened to Manesh Sarkar? What happened to Saurav Chaudhary? And the 9 Deka, we can tell some few players who have been so the favorites for the Pride Mavericks. For them. And Aman, do you still want to hold Manesh Sarkar in their bench, or is there any slight chance that Pride Mavericks can bring Manesh Sarkar to give some play time in this match? At least maybe they can take that slight chance that can give a little amount of joy for the Pride Mavericks if they are going to win this match or not. In the previous match, we saw that Manas Sarkar got replaced by Lakpat Amang, and the good thing is that Lakpat Amang is back in the ground. The way he went on the stretcher, it looked like that he will not be available for the game further, but he came back, and it's a good news for Pride Mavericks. It's only a 2-goal lead. What a shot it was! It was fast and furious, and same is the reflection of Ayush Das. Just look at this. I just want to see that whether it was a deflection or not. No, but look at that effort from Ayush Das. He tried his level best. From this angle, you will be getting some more clearance. And yes, Ayush Das was in the air, but nobody was under it to catch him. He landed safely on the ground. He transferred his body weight on the left hand, and the good thing is he is fine. Tomorrow is a big day, John, for the Cluster A. We are going to get the second team. It will be a knockout match, I will say. A quarter-final. Because the team who wins will be going into the semi-finals. The team who loses will be going out, and if the match goes on a draw, then surely G Plus Athletics is going to be the second team to qualify for the semi-finals from that cluster. But for cluster B, we would have to wait. ये किक आई है, और यहाँ देखिए संघर्ष चलता हुआ। बारीगुरी एफसी के खिलाड़ी, बहुत अच्छी चीज ही हमें देखने को मिली है कि उन्होंने 2 गोल्स की लीड के बाद भी गोल करने की इच्छा को मरने नहीं दिया है, लगातार प्रयास करते रहे। लेकिन लखपत तमंग, आज ये खिलाड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि इनको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा बार चोटिल होते हुए नजर आए। गोल लाइन के बाहर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गेंद के लिए जूझ रहे हैं खिलाड़ी। जॉन, टुमारो द बिग गेम, द बिग राइवलरी, G Plus Athletics
versus Northeast United FC, and we are expecting lot spectators tomorrow. What do you think about that game? Might be possible कि जी प्लस एथलेटिक्स अपना मुकाबला जीतने के बाद सबसे ऊपर पहुंच जाए, लेकिन सिर्फ लड़ाई एक ही स्पॉट की बची हुई है अब दोनों क्लस्टर में. क्लस्टर ए में भी एक टीम क्वालिफाई कर चुकी है और क्लस्टर बी में भी एक टीम क्वालिफाई कर चुकी है. Coming back to my question, John, what do you think about the second game of 2nd January? G Plus Athletics versus the pride of Northeast football, Northeast United FC. I don't know whether you would have watched the game of Northeast United FC in ISL. Not I'm talking about the GPFL. So why I'm coming to this point? They are not the side like Guwahati Town Club or Young Amateur Club to go and get confused, in the field, whether getting fumbled or trying with some different plans or not able to, bring the goals for their side. They are being the champion side in the Northeast Indian football. So that's why Northeast United FC are the champions. And that is the reason why they are being the strongest contenders to watch out. They know how to win the matches. And you know very well, in the beginning of this GPFL, when they came to play their first match against the team NRL, we thought that Northeast United FC will be winning this match against team NRL, Numaligarh Refner Limited. But what literally happened? Numaligarh Refner Limited, they are coming back after a big defeat in their game number 1 against Northern Frontier Railway. By the margin of 4 goals, I think so, if I'm not wrong. We came to see a different result from the team Numaligarh Refner Limited. Ultimately, dominated that match against Northeast United FC. So Northeast United FC, they don't have, any other ideas. Like, they don't have nothing in the match, because they played their first match in the GPFL with the same squad what we came to see in the last few matches. Even though they have some plenty of new players in their side, they can come with some new bench strength players. They can provide some new players. So you can't predict easily that Northeast United FC versus G Plus Athletics match is going to be only one winner, that I can say. And team G Plus Athletics, we know how they continued and how they started their campaign in this GPFL. And look at this one. This is absolutely a stunner, and really quite enjoyable one to watch out. Not only the players, even the referee is enjoying this moment, because these moments are not the one we are not ready to get once again in this GPFL. That one left hand, that shoulder tackle, that shoulder push, seems to be they both are unhappy with the physical appearance, but I think so they are so happy with the heart. So that's why they have some golden hearts. The good thing is the climax of this movie was a fair one. We didn't see any punch or any action there. Jackson Victor, this man. So tomorrow, the 2nd of January, G Plus Athletics. Oh, it's a big mistake. I'm really sorry, John. G Plus Athletics
and Northeast United FC. They are going to play the first match of the day. Really sorry, guys. If you guys are here, I will just update you with this thing that tomorrow's first game is going to be between G Plus Athletics and Northeast United FC, and I am waiting for it desperately. It is going to be the first knockout match, so-called knockout match. Good delivery, but Barikuri FC didn't get that ball inside penalty box. A good kick towards the right. And there you will find Jackson Victor. Barikuri FC. They are leading in this game. So the first game is going to be between G Plus Athletics and Northeast United FC. And the second game, Assam Police versus United Chirang Duar FC. And Barikuri FC, if they are going to win this game, then they will be looking forward to win their last game and qualify for the semi-finals. And no team can compete for that spot if Barikuri FC is winning their last game also after this win. हम बात कर रहे थे कुछ पलों की जो इस गुवाहाटी प्रीमियर फुटबॉल लीग ने हमें दिए हैं, चाहे जी प्लस एथलेटिक्स की वो बड़ी जीत हो एफसीआई के खिलाफ, कुछ ऐसी लड़ाइयाँ, कुछ ऐसी नोकझोंक भी हमने देखी। अच्छी बात ये रही कि उसके बाद दोनों ही खिलाड़ी मुस्कुराते हुए नजर आए। इंटेंसिटी ज़रूर हाई हो जाती है और वहाँ पर जहरुल इस्लाम भी मुस्कुराते हुए दिखे। बारीगुरी एफसी के लिए एक फ्री किक, फिर से खतरा बन सकता है ब्राइट ईस्ट के लिए, लेकिन ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। साइड लाइन के बाहर जाएगी गेंद, थ्रो इन मिला है टीम बारीगुरी एफसी को। और देखना पड़ेगा कि कौन लेने आ रहा है ये फ्री किक, माफी चाहूँगा, वहाँ ये थ्रो इन दूसरे खिलाड़ी आए हैं। जिस खिलाड़ी ने फ्री किक ली थी वो नहीं गए वो थ्रो इन रिसीव करने। अब पेनल्टी बॉक्स के अंदर क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ होता हुआ नजर आया नहीं। प्रैक्टिस में के खिलाड़ी ने गलती करी, लेकिन उस गलती का ज़्यादा खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। फिर से गेंद को साइड लाइन के बाहर धकेला गया। एक और थ्रो इन। और आप जब देखेंगे मैचेस तो अब सिर्फ 4 ही मैचेस बचे हुए हैं इस मैच के बाद लीग राउंड के। कितने सारे मैचेस हमने देखे जॉन, और एक एक करके सारे मैचेस ख़त्म होने को आए। 10 दिसंबर को शुरुआत करी थी हमने इस सफ़र की। जब पहले दिन आए थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत समय लगेगा। ऑब्वियसली वो समय तो लगेगा ही, लेकिन चीज़ ये है कि आपको वो समय पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो एक्शन है वो बहुत कमाल का देखने को मिला हमें। तो कल के बाद फिर अंतिम दिन 3 तारीख को जो बचे हुए 2 मुकाबले हैं, गुवाहाटी टाउन क्लब अब उस रेस से बाहर हो चुकी है, सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस से। वो असम पुलिस के खिलाफ खेलेगी और असम पुलिस के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा ये, क्योंकि 2 तारीख का जो दूसरा मुकाबला है वो खेलेंगे। उसके बाद 3 तारीख का पहला मुकाबला खेलते हुए दिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। वहीं पर 3 तारीख का जो दूसरा मुकाबला है वो हमें ASEB स्पोर्ट्स क्लब और बारीकुरी FC के बीच में देखने को मिलेगा, तो वो भी एक बहुत कड़क मुकाबला रहने वाला है। ASEB स्पोर्ट्स क्लब, उनके पास तो ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो बारीकुरी FC को अगर किसी भी तरीके से हरा देते हैं तो फिर क्लस्टर B की पॉइंट्स टेबल में पूरी तरीके से खलबली मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। और वहाँ फिर हमें गोल डिफरेंस देखना पड़ेगा। जो टीम ज़्यादा प्लस गोल्स में होगी वो हमें पहुँचती हुई नजर आएगी। लेकिन शेरपा ये क्या कर रहे हैं? आप जोसेफ से पंगा ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरीके से जोसेफ दौड़ते हैं ऐसा लगता है कि सामने वाला खिलाड़ी उनकी दौड़ देखकर ही नर्वस हो जाएगा। कॉर्नर मिला है टीम बारीगुरी FC को, और शायद ये कॉर्नर नहीं मिलता अगर शेरपा उस गेंद को एक बार में कलेक्ट कर लेते। यहाँ थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में गड़बड़ी देखने को मिली। लकपा तमंग चलेंगे अब बाईं तरफ से,
उनको जरूर रोकने की कोशिश की जा रही है बारीकुरी एफसी के खिलाड़ियों की तरफ से। अकेले ही चल रहे हैं लखपत तमंग और उस खिलाड़ी को आगे धकेलते हुए दिखे जोसेफ रोबल। एक बार फिर से दिक्कतों में है टीम और आ गया है गोल। प्राइड ईस्ट मैवरिक्स ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऑफ साइड ट्रैप में फंस गए। जरूर जश्न मनाने की शुरुआत हुई थी, जरूर थोड़ा सा शोर सुनाई दिया था हमें दर्शकों की तरफ से, लेकिन उस पूरे जश्न पर पानी फेर दिया असिस्टेंट रेफरी के उस फ्लैग ने। John, do you think that whatever Sherpa, the goalkeeper of team Pride East Mavericks is he doing right? Because he is almost giving a challenge to Joseph Robel if he can come and score a goal. So rather than going for that, just imagine the mind voice of Joseph Rebel right now. अरे क्या यार, क्या हुआ? What are you doing to me? Whatever the chances which I am taking in this match. And he's the first man to score for Barikuri FC in this match. And literally you can't do it. And look at the acceleration. Once again, it should be a Joseph Rebel. Is there any chance for the one-on-one? And still a short pass from the left. Barikuri FC. You just have to congratulate the effort from the Joseph Rebel. That fine short pass. Jersey number 33 from the Barikuri FC. What have you done right now? You can't do it. S. George Combe, the man who scored the second goal, taken the responsibility to go for the kill. So many scenes. It's all happening in Judgesville, Guwahati. And it's all happening in the day 1 of 2024. And once again, wishing all a happy new year. The people witnessing this match, not only in Judgesville, Guwahati, and also wherever you are, you can watch this match only on Fan Code app. And Fan Code is bringing you one of the best football action. And that's why football is so very loud in Guwahati. And this is not a good picture right now. Barikuri FC player. Is not okay right now. Varish Chutia the man. And that right foot hurting his head. We came to see so many times the injuries happening like this. Was he in that control to go for the ball? After it taken a few seconds later, he came to realize that that right footer from the player of Pride East Mavericks hurting the Harish Chutia. छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक और उसके बाद फिर से ये दोनों ही टीम्स हमें खेलती हुई नजर आएंगी। अच्छा खेल दिखाया है अब तक बारीकुरी एफसी ने। लगभग एक गोल और दाग दिया था, लेकिन क्या कमाल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं जोसेफ। हमने थोड़ी सी बात करी थी उनकी अप्रोच पर कि जिस तरीके से वो खेलते हैं वो थोड़ा सा कम रिलाई करते हैं बाकी खिलाड़ियों पर, खुद ही गेंद लेकर चलते हैं और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो किसी और खिलाड़ी को पास दें। कुछ ऐसे रनर्स रहे हैं जॉन इस पूरे टूर्नामेंट में जिन्हें याद रखेगी गुवाहाटी की जनता। जीतू अहमद भी इसी तरीके से लेफ्ट फ्लैंक से हमें दौड़ते हुए नजर आते हैं। लखपा तमंग भी आपने देखा कि लेफ्ट फ्लैंक से दौड़े, कई बार दौड़े। और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइड ईस्ट मैवरिक्स के एक खिलाड़ी चोटिल हुए हैं। ज़्यादा समय नहीं बाकी है इस मुकाबले में भी। जो भी करना है प्राइड ईस्ट मैवरिक्स को बहुत जल्दी करना होगा। ओ ये बहुत तेज कॉलिजन था और तुरंत नीचे गिरे और उसके बाद उठे ही नहीं। ज़रूर आपको फ़ोन पर या अपनी स्क्रीन पर
ऐसा नॉर्मल सा कोलिजन लग रहा होगा, जब आप ग्राउंड से देखेंगे ना तो शायद आपकी भी रूह कांप जाएगी इस तरीके के कोलिजन देखकर। कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी हाइट के खिलाड़ी हैं प्राइडिस मैवरिक्स के पास। ये भी खिलाड़ी जर्सी नंबर 12 सब्स्टिट्यूट के रूप में आए हैं। सौरभ घोष, राजदीप सरदार, मनज सरकार। तो इन लंबे खिलाड़ियों को अगर आप मौका दें पेनल्टी बॉक्स के अंदर, फ्री किक्स पर, कॉर्नर्स पर, तो ये कन्वर्जन भी लाते हुए आपको दिखाएंगे। आयुष दास, एक और मुकाबला हो सकता है जहां पर वो कोई भी गोल कंसीड करेंगे नहीं। ये भी देखना होगा कि कौन वो गोलकीपर है जिसने 6 मुकाबलों के बाद सबसे कम गोल कंसीड करें। आज सुभजीत साहा की जगह पर हमें शेरपा आते हुए नजर आए हैं गोलकीपिंग पर। एक बार और ऐसा हुआ था, प्राइडिस मैवरिक्स ने 2 बार गोलकीपिंग में बदलाव किया है, सब्स्टिट्यूट गोलकीपर का यूज़ किया है इस पूरे प्रोटेक गुवाहाटी प्रीमियर फुटबॉल लीग में। और आज अपने इस कारवां पर फुल स्टॉप लगाएगी टीम प्राइडिस मैवरिक्स। हारेंगे तो बाहर हो जाएंगे, और अगर यहाँ से एक वापसी की कहानी लिखेंगे तो उस कहानी के बाद फिर थोड़ी सी निर्भरता दिखाते हुए नजर आएंगे बाकी टीम्स पर, और खासकर टीम बारीकुरी एफसी पर। क्योंकि इस मुकाबले में अगर किसी उलटफेर का शिकार होती है टीम बारीकुरी एफसी तो फिर एक ही मैच इनके पास बचता है, और वो मैच जीतेंगे तो फिर 10 अंक रहेंगे इनके, फिर भी प्राइडिस मैवरिक्स बाहर हो जाएगी। मतलब प्राइडिस मैवरिक्स इस चीज पर जरूर निर्भर रह सकती है कि बारीकुरी एफसी जीतेगी या फिर नहीं। येलो कार्ड दिखाया गया है प्राइडिस मैवरिक्स के खिलाड़ी को, कौस्तुभ माली से। क्या खुश जरूर नहीं है, और कोई भी खिलाड़ी खुश नहीं होता है जब उसको येलो कार्ड दिखाया जाता है, जब उसको रेड कार्ड दिखाया जाता है, या उसके अगेंस्ट में पेनल्टी किक दी जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे क्रिकेट के खेल में किसी खिलाड़ी को एलबीडब्ल्यू करार दिया जाए। फ्री किक टीम बारीकुरी एफसी को मिली है, तो 2 खिलाड़ी वहां ऐसा लग रहा है कि शायद गेंद के पास रहेंगे। जी नहीं, वहां सिर्फ एक ही खिलाड़ी देखने को मिलेंगे बारीकुरी एफसी के। लेटमिनलैन अच्छी फ्री किक का डिलीवरी देते हैं ये, लेकिन इस बार क्रॉस बार के बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी ये गेंद। दर्शक आज भी बहुत अच्छी संख्या में हमें देखने को मिले हैं। देख सकते हैं आप रिप्ले में कि कितने सारे दर्शक मौजूद हैं वहां। अभी हम देखेंगे कि कितने दर्शक आज आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर बारीकुरी एफसी क्या एक और अटैक बनाएगी। जोसेफ ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हैं, साथ ही साथ जो एंड्योरेंस है, जो स्टेमिना है, वो भी इस खिलाड़ी में खूब देखने को मिलता है। हमें एक बार प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं जोसेफ फ्रोबल। जब आप इतनी तेज़ गति से दौड़ते हैं तो अपनी एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट करते हैं। उस एनर्जी को बचाए रखना लंबे समय तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी। थ्रो इन बारीकुरी एफसी के लिए। बहुत कम मौके दिए हैं प्राइडिस मैवरिक्स को। लखपा तमंग आज ज़्यादा गेंद के साथ हमें नज़र आए ही नहीं है, और वो ज़्यादा आगे आते भी नहीं है। आगे इन द सेंस कि अपने गोल पोस्ट की तरफ, वो आपको मिड लाइन के उस तरफ ही देखने को मिलेंगे। और अगर आपको वो नहीं नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि डिफेंस ज़रूर वो क्लियरेंस नहीं ला पा रहा है जिसकी ज़रूरत है। प्रेम नार्जरी आज असिस्टेंट रेफरी की भूमिका में हमें देखने को मिलते हुए। शॉट आया है ये, और गोल पोस्ट के बिल्कुल सामने से यहाँ रिसीव करते हुए दिखे वो खिलाड़ी, लेकिन क्रॉस बार के ऊपर रहेगी ये गेंद भी। जर्सी नंबर 33 एस जॉर्ज कॉम, जो कि एक गोल स्कोर कर चुके हैं। क्या यहाँ
फिर से ऑफसाइड का फ्लैग उठाता, ऐसा लग तो नहीं रहा है, तो फिर वो खिलाड़ी उस किक के लिए क्यों नहीं गए, बड़ा सवाल रहेगा जरूर। अब गेंद आई है लखपा तमंग के पास, बहुत समय के बाद आई है और अब फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं वो। जहरुल इस्लाम, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हुए लखपा तमंग। वैसे ही वहां पर उनको गेंद ज्यादा मिल नहीं रही थी और ये लीजिए लखपा तमंग को येलो कार्ड दिखा दिया गया है। और लखपा तमंग को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए जहरुल इस्लाम। ये अच्छी खबर नहीं है, प्राइड ईस्ट मैवरिक्स का ये अंतिम मुकाबला है। तो ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है वैसे, अगर रेड कार्ड आता भी है तो फिर इस मुकाबले से ही बाहर होंगे, क्योंकि इसके बाद तो इनके पास मुकाबले ही नहीं बचे हुए हैं इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल भी उससे चिंतित होते हुए नजर आए नहीं हमें लखपा तमंग उस येलो कार्ड से। 0-2 की स्कोर लाइन अभी भी हमें देखने को मिलेगी। बारीकुरी एफसी, एक और अच्छा शॉट, ब्लॉक भी देखने को मिला हमें, प्राइड ईस्ट मैवरिक्स के खिलाड़ी का अच्छा शॉट था वो। बारीकुरी एफसी के खिलाड़ी ने वहां ब्लॉक किया उसको। अच्छी बात ये रही कि गेंद उनके हाथ से नहीं टकराई। जोसेफ फिर से तेज गति से दौड़ते हुए, इस बार पहली बार राइट साइड से, और एक खिलाड़ी ने जरूर उनके शोल्डर को पकड़कर उनको गिराने की कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं गिरे और उनके जो खिलाड़ी थे वो गिरते हुए नजर आए। नहीं जीत पाएंगे आप उनसे। और आप देखिए जिस तरीके से गिराने की कोशिश करी गई जोसेफ को, लेकिन जोसेफ गिरे नहीं। अगर गिरते तो शायद एक पेनल्टी किक मिल सकती थी टीम बारीकुरी एफसी को। अभी भी खतरा टला नहीं है। पहली बार ऐसा हमने देखा जब जोसेफ बाईं तरफ से नहीं दाईं तरफ से हमें अटैक बनाते हुए दिखे, रन बनाते हुए दिखे। दूर से ही एक शॉट आया जो कि दूर ही जाता हुआ हमें दिखा। Last few minutes, it's like unbelievable scenes, and you know, the tackles and the players getting interception. Still, Pride is Mavericks wants to bring the goal for them in this match. So it's all happening in Judgesville, Guwahati. Still more to come for the Pride is Mavericks, but it's been a great tournament for them. Lakpak Tamang. A few exchange of words that we came to see in the last few minutes back about the referees. It was going and having an instruction. So this is a day, what you call spreading the positivity with each other. So a day to celebrate because it's a new year. And this is the first day of this year. And now we are witnessing a beautiful match in Judgesville, Guwahati in GPFL. The Pride is Mavericks versus Barikuri FC. But this is not the proper story from the Pride is Mavericks. Still we have another 8 to 9 minutes which is left in this match. So Pride is Mavericks looking for a goal, but Barikuri FC, Joseph Rebel, is the man who is literally covering all the areas, and now there is an appeal for the handball. Jackson trying to show his full perfection, but it's all dynamics and the way he wants to go for the ball. Everything were literally going well, but jersey number 18 of Pride East Mavericks was not happy with the way Jackson Victor went for the ball. Sanjay Bumach, the captain, is there, and Dinesh Bahat, the man who made the tackle that we have came to see, that
look at the long aerial ball. This is what exactly I'm talking about from the beginning of this match in the first half also. So how many the long aerial balls and the n number of passes which you generate, surely this will be a time to watch out what will be the referee decision. So is that will be a penalty call, or they need a physio right now to check the player whether he is okay or not. Let us just talk about this match so far. What happened from the first half and in the second half. Sentong Boy from the Barikuri FC and yes, George Com, Joseph Rebel, Jackson Victor, they came, with the right plans. And Letman Lan, this man is always been a special one to watch out, but it should be a penalty call. Yes, penalty for the Barikuri FC. This is what I was keep on telling in the last few seconds when the tackle has been happened. And now the referee has given the full justice to the Joseph Rebel. Time to show his full athleticism. Joseph Rebel, can he do it? Yes, it is. He scores. Surely he won't be missing this penalty chances. An opportunity for the Barikuri FC to go for the third goal in this match. And that came from the legs of Joseph Rebel. If I'm not wrong, the second goal for Joseph Rebel. And just look at this, that it was a risky shot. He tried to hit that ball on that top corner, top right corner. And he got that. Great execution. Third goal for team Barikuri FC. It's 3-0 now. And I think Pride East Mavericks, it will be super tough for them to now make a comeback. It's already 87 minutes up. 11 goals for Barikuri FC in this GPFL and 8 for Pride East Mavericks. GPFL total goals 119. And it's also very tough to complete that 150 mark, I think so, because we have only 7 matches left after this. 4 league matches and then 2 semi-finals and 1 final. So in 7 finals, are we going to see 31 goals, which means that on an average more than 4 goals in every match. It's possible, it's not impossible, but it's very, very tough, because when we will see 2 good sides competing, they will not give a chances that easily. And it actually happens, we have seen. But Barikuri FC, they will be strong, and look at this run, and that ball hitting that crossbar, John. This man, Joseph. I just want to see that replay once again. And also want you to see this. This ball hitting that crossbar. So close yet so far. Pace, that speed and acceleration, everything is fine with Joseph Rebel. So that's why he is getting that full justice for his wonderful sprint work and the way he creating some beautiful chances in this match. He get the total rewards. So that's why God has blessed him in today, this first day of this new year, with 2 goals for the Barikuri FC. That ball hitting that goal post, literally no one would have imagined a second why that goal has not came for Barikuri FC. Why is the call, and why is the call same to Pride East Mavericks? And not only why, there are so many questions which is coming to everyone's mind, that
what happened to the team Pride is Mavericks, and now it's time for the added time in this 90 minutes football match. So which means for the next 2 to 3 minutes it's going to be a blockbuster action. At least the people who have came here in Judges Field Guwahati will be looking, will be expecting something from the Pride is Mavericks, whether Pride is Mavericks can give a little amount of joy and peace to their fans. So will they be answerable to the crowd who have came here in Judges Field Guwahati? Can Pride is Mavericks will give a little amount of smiles on their, the fans' face? 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम इंक्लूड किया गया है इस और वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट होता हुआ हमें नजर आएगा। 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है और 3 ही गोल की बढ़त है टीम बारीकुरी एफसी के पास, जिसमें से जो 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है उसमें से अब मात्र 80 सेकंड्स बचे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं और उसी के साथ साथ वापसी करने की उम्मीद भी प्राइड इज मैवरिक्स की। क्या जाते जाते अपने दर्शकों के चेहरे पर कुछ मुस्कान ला पाएंगे या नहीं, वही सवाल पूछा जॉन ने मुझसे, देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बारीकुरी एफसी वो कुछ और करने के इरादे से आज उतरे हैं इस मैदान में, लेकिन सिर्फ जोसेफ रोबल ही अकेले लीड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से कैरी कर रहे हैं अपनी टीम को। अच्छा योगदान मिला है उनको मिडफील्डर्स का, अच्छे क्रॉसेस आए हैं उनके लिए, और शायद उसी वजह से वो हमें अच्छे रन्स बनाते हुए भी दिखे हैं। इंसाइजिव रन्स उनकी तरफ से हमें देखने को मिले। बहुत ज्यादा डैमेज दिया है आज टीम प्राइड इज मैवरिक्स को। ज्यादा दूर नहीं है टीम बारीकुरी एफसी एक और जीत हासिल करने से, और आयुष दास की तारीफ एक बार फिर से करनी पड़ेगी। लगातार 3 मुकाबलों में कोई गोल ना कंसीड करने के बाद चौथे मुकाबले में कुछ गोल्स कंसीड करे, लेकिन फिर से 5वें मुकाबले में अपनी गाड़ी को ट्रैक पर वापस लेकर आते हुए एक और क्लीन शीट दर्ज करने वाली है टीम बारीकुरी एफसी। कुछ ही सेकंड्स में आपको वो विसल बजती हुई नजर आएगी जहरुल इस्लाम की, और उसी के साथ आधिकारिक तौर पर यह घोषणा हो जाएगी कि टीम बारीकुरी एफसी इस प्रोटेक गुवाहाटी प्रीमियर फुटबॉल लीग में तीसरी जीत हासिल कर चुके हैं। यहां दरअसल कुछ हुआ है, प्राइड ईस्ट मैवरिक्स के खिलाड़ी जहरुल इस्लाम से थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। फ्री किक मिली है टीम प्राइड ईस्ट मैवरिक्स को जाते जाते। क्या मेरी बात को गलत ठहरा पाएंगे ये खिलाड़ी, क्योंकि अभी मैंने ये चीज बोली कि आयुष दास ने इस मुकाबले में भी कोई गोल कंसीड नहीं करा, लेकिन बहुत नजदीक से, बहुत ज्यादा नजदीक से पेनल्टी बॉक्स के ये फ्री किक रिसीव करेगी टीम प्राइड ईस्ट मैवरिक्स। और एक और सवाल, क्या जाते जाते अपने दर्शकों के चेहरे पर एक मुस्कान छोड़कर जाएंगे? दीवार तैयार है, आयुष दास भी यही बोलते हुए कि मुझे भी देखने दीजिए कि लकपा तमंग करने क्या वाले हैं। किक तो वही लेंगे, पिछले कुछ मुकाबलों में लकपा तमंग ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है, और ये गेंद ऊपर से जाती हुई क्रॉस बार के, और इसी के साथ फाइनल विसल आ चुकी है जहरुल इस्लाम की। बारीकुरी एफसी एक और क्लीन शीट दर्ज करती हुई 3-0 से ये मुकाबला जीत लिया है। जोसेफ रोवल के पैर से आया 18वें मिनट में एक गोल, और उसके बाद एस जॉर्ज कॉम ने अगले 5 मिनट के अंदर एक और गोल किया, बढ़त को दोगुना किया, और जाते जाते 87वें मिनट में जोसेफ रोवल ने एक पेनल्टी किक के जरिए तीसरा गोल स्कोर किया। बारीकुरी एफसी 3 प्राइड ईस्ट मैवरिक्स 0। बारीकुरी एफसी
उम्मीदें अभी भी बरकरार इनकी सेमीफाइनल में पहुंचने की। वहीं प्राइड ईस्ट मैवरिक्स का सफर इस प्रोटेक गुवाहाटी प्रीमियर फुटबॉल लीग में समाप्त होता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद उनका इस प्रतियोगिता में भागीदारी करने के लिए। और जो फाइनल स्कोर लाइन हमें देखने को मिलती हुई इस मुकाबले की वो यही कि बारीकुरी एफसी 3 और टीम प्राइड ईस्ट मैवरिक्स 0। कल के मुकाबले, कल एक बड़ा मुकाबला जी प्लस एथलेटिक्स आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ पहले मैच में खेलती हुई नजर आएगी। वहीं पर आपको यह भी पता चलेगा कि क्लस्टर ए में डीबीआई के बाद कौन सी टीम वो होगी जो सेमीफाइनल में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा मुकाबला कल के दिन का असम पुलिस बनाम यूनाइटेड चिरांगदुआर एफसी। असम पुलिस के पास ज्यादा कुछ तो नहीं है खोने को, लेकिन जरूर यूनाइटेड चिरांगदुआर एफसी का वो खेल बिगाड़ सकते हैं। कल शाम 5 बजे आपको यह मुकाबला देखने को मिलेगा। तो अब सिर्फ 4 लीग राउंड के मैचेस बचे हुए हैं और पूरे प्रोटेक गुवाहाटी प्रीमियर फुटबॉल लीग में 7 मुकाबले। मिस मत करिए एक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा याद आने वाला है फिर ये प्रोटेक गुवाहाटी प्रीमियर फुटबॉल लीग। मैं लेता हूं आपसे अलविदा, लेकिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए नीचे मौजूद हैं जॉन, जो आपसे कुछ ही पलों में जुड़ते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद, बने रहिए फैन कोर्ट पर।
presentation. First of all, wish you all a happy new year. 2024 as begins, and from today it's going to be a more joy and peace to all the people. Welcome everyone to the post-match presentation of this Protech Premier Football League Season 1 2023. But we are in 2024. The day has started, the first day, and time to say the word of thanks. Title sponsor Protech, organized by Guwahati Sports Association, powered by James Sports India Private Limited, associate partner Assam Cricket Association, equipment partner Wiki, apparel partner X, Undefeated Army, gift partner BS Sports, and digital partner Talk Sports and Event Management. This is the match number 38. It tells the story between these two sides. Fridays Mavericks versus Barikudi FC, and Barikudi FC winning this match by huge margin by 3 goals, but Fridays Mavericks couldn't able to convert it. And there are some plenty of things happened in this match. Good in their attempts of Fridays Mavericks, but couldn't able to deliver it with the goals, and results were not shown in their hand. But when it comes to the Friday, Barikudi FC, Joseph Rebel, the man who scored the first goal, and St. George Combe scored the second goal, and Joseph Rebel, this man is something brilliant, scoring another goal to finish off in style for the Barikudi FC to win this match. It's time to call the guest, Mr. Santi Parade, Vice President of Guwahati Sports Association, to give the player of the match. So it's going to be no doubt on that. The force, the speed, and the acceleration, and he's an absolute agile. He's going to be a one-on-one lead. Joseph Rebel of Barikudi FC for his wonderful 2 goals. Such a huge applause. We just have to give and congratulate this man. He's been such a phenomenal form throughout this GPFL. It's been in the last 2 weeks for the Barikudi FC. No one could stop him because he's having such a great sprint, and he's a great runner. So that's why he's can able to score the goals for the Barikudi FC. That's it from the post-match presentation. Tomorrow we have 2 matches. G Plus Athletics is going to play against Northeast United FC, the match number 39, and match number 40, Assam Police versus United Shirangdewar FC. So before we dive into thank you, but our production wants to say in Chennai Tamil language for the New Year wishes. அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். Thank you.